Students, today I would like to emphasize more on the debit and credit concept of accountancy. As you all know that all transactions in accounts are expressed in terms of debit and credit. But I really don't know why in BRS statement most of the books use the concept of minus and plus, which creates a lot of problems for most of the students. So I would be taking a question on BRS today. Before that, I want to explain you the concept of BRS. Why does a difference occur between a passbook and a cash book, and why a BRS is prepared? Cash book is maintained by the customer, whereas passbook is maintained by the bank. Though the passbook remains with the customer, but the entries in the passbook are made by the bank. So what happens when we have balance in the cash book? It is an asset for the customer. So there will be a debit balance. There would be a debit balance if he has funds in the bank. That means favorable balance of cash book. Favorable balance of cash book will always be a debit balance. Now, if we have owed on something from the bank, then for the customer it becomes a liability. So then it will be a credit balance. It will be a credit balance when there is overdraft. From the bank. Overdraft from the bank by the customer. Now, on the contrary, what happens is the bank has funds of the customer. Bank has funds of the customer. So when bank has funds of the customer, bank owes this money to the customer. So for bank, this is a liability. So there will be a credit balance. When customer has a favorable balance in the bank, bank owes that money. So that means there will be a credit balance. That means favorable balance in the bank account. Favorable balance in the bank account of the customer. In the bank account of the customer, if there is a favorable balance, there will be credit balance. And if the bank has given funds to the customer, that means customer has overdrawn from the bank, then from the bank perspective, it becomes an asset for the bank. So there will be a debit balance. Which means again overdraft from the bank by the customer. So always be clear with the debit and credit aspect. If you are clear with the debit and credit aspect, you will never have a problem. Now what happens when there are certain transactions which the customer records in its cash book and they are not recorded subsequently by the banker due to lack of communication or due to lack of exchange of communication, exchange of notes, etc. So there could be a difference. At times we have given a standing instruction to the bank to make payment on our behalf,
and the customer has forgotten to make the entries in the cash book. So the simple rule applies here is debit what is not debited, debit what is not debited, debit what is not debited, credit what is not credited, credit what is not credited. Second rule, if you have debited more, if debit has been more, so if you have made an excess debit, if you have made an excess debit, then credit the amount, credit the amount. What have you done? You have done excess, wrong excess debit, wrong excess debit, then credit the amount. Same thing, if you have wrong excess credit, you have wrong excess credit, then debit the amount, then debit the amount. This is the basic principle which you have to apply in BRS. If you understand this, you can do any question of the BRS. So I will do one illustration of T.S. Grewal, illustration number 13, page number 13.49 with you on the board, and then you will be able to understand. Follow me with attention, you will be able to get it. We have debit, we have credit. The question says balance, bank balance as per passbook, particulars, bank balance as per passbook. Now, as I told you, if there is a bank balance as per passbook favorable, if it is nothing is mentioned, it means it is a favorable. That means bank owes this money to us. Bank owes this money to us, so there will be a credit balance of 10,000 rupees. We will write on the credit side 10,000 rupees. Is that clear to all of you? Then he says, check deposited into the bank, but no entry was passed in the cash book. Now what has happened? We have deposited 500 rupees of check in the bank. That means we were supposed to debit bank. We have not done that. Bank has credited us. So what we are going to write is that, check deposited, check deposited in the bank, but not entered in cash book. So what are we going to do? We are going to debit this amount by 500 rupees. We are going to debit this amount by 500 rupees. Have you got the concept? Sir, we have deposited the check in the bank, but we have not entered in the cash book, so we will debit this amount. Third, check received and entered in the cash book, but not sent to bank. Now this is the reverse of this. What has happened? We had received a check, we have entered in the cash book, but we have not sent it to the bank. So I told you in exchange, there has been no exchange, but we have entered. That means when we have a check and we deposited and we entered in the cash book, that means we have made the debit. We have done the debit, but it is not sent to bank. That means we have done wrong debit. So we have done excess debit. We have to credit the amount. That is how much? 1200 rupees. We will credit this amount. We will write check entered in cash book, check received, entered in cash book,
entered in cash book but not sent to bank. Again I repeat, what we did an excess debit. Why? We have not yet deposited check into the bank, but we have entered in the cash book. So how will the bank credit us when the bank has not received the check? So how will the bank credit us? So that means we have made an excess debit of how much amount? 1200. So we have credited this. Fourth, credit side of the cash book bank column has been cast short. I repeat, what have we done? When we were making the total of the cash book column of the credit side, it was undercast. Undercast मतलब टोटलिंग करते समय हमने कम टोटल करा है, that is of 200 rupees. So we are going to write 200 on the credit side. That means credit what is not credited. Credit what is not credited. So we are going to write credit side of the cash book. 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 Bank column, credit side of the cash book, bank column, cast short. Cast short means हमने टोटल करते समय उसका टोटल कम किया है, cast short. Then we have fifth, insurance premium paid directly by the bank under the standing advice. Now listen to me. At times what happens, we give instructions to the bank that you make payment on our behalf. Bank has made the payment on our behalf. Bank has debited this amount, but we have not credited the bank. We have not credited the bank. That is 600 rupees. I repeat, again here we have not credited. What is not credited? तो हमने क्रेडिट कर दिया. क्या हुआ है? हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दी थी कि हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिएगा. बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है. बैंक ने हमें डेबिट कर दिया है. हमने बैंक को क्रेडिट नहीं किया, इसलिए क्रेडिट कर दिया अभी 600 रुपीज से. तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक. Insurance premium paid by bank under the standing advice not entered in cash book, Then we have bank charges entered twice in cash book. हमारी एंट्री क्या होगी? हमने बैंक चार्जेस को डेबिट करके अपनी कैश बुक को क्रेडिट करा हुआ है 20 से 2 बार. तो हमने क्या कर दिया है? एक्सेस क्रेडिट कर दिया है. तो अब हम इसको डेबिट कर देंगे. आई रिपीट, बैंक चार्जेस की जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश बुक को, कैश बुक में हम टू बैंक कर देते हैं. बैंक चार्जेस टू बैंक हमने 2 बार कर दिया अपनी कैश बुक में. इसका मतलब हमने बैंक को 2 बार से क्रेडिट कर दिया है, एक्सेस क्रेडिट कर दिया है. तो अब डेबिट कर देंगे 20 रुपीज से. 20 रुपीज से डेबिट कर देंगे. हम इसमें लिख देंगे बैंक चार्जेस entered twice in cash book. इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट. अगेन व्हाट हैज हैपेंड? हमने चेक इशू कर दिया है, हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया है, बैंक के पास वो चेक पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक हमें डेबिट कैसे करेगा? तो अब हमें बैंक को क्या करना होगा? डेबिट करना पड़ेगा. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट. 7th है ये, चेक्स इशूड but not presented to bank. हमने बैंक को प्रेजेंट नहीं किया है. we have not presented to the bank. हमने बैंक को प्रेजेंट नहीं किया है. we have not presented to the bank. next, check received entered twice in cash book. हमारे पास चेक आया, हम जब चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हम बैंक को डेबिट करते हैं. हमने 2 बार कर दिया है, इसका मतलब हमने एक्सेस डेबिट कर दिया है. तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 रुपए से.
1000 रुपए से हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज हमने 2 बार जो चेक रिसीव किया है 2 बार अपनी कैश बुक में एंटर कर दिया है। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो इसका मतलब हमने एक्सेस डेबिट कर दिया है, तो अब हम क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज से। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब क्या हुआ है, हमने जब बिल डिस्काउंट कराया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था, अब वो डिसऑनर हो गया है तो हमें बैंक को क्रेडिट करना है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। बैंक हमें डेबिट कर चुका होगा क्योंकि बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमें क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, हमने बैंक को क्या नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है, तो हमें बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा 5000 रुपीज से। बिल्स एक्सचेंज डिस्काउंटेड got dishonored, not entered in कैश बुक। हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया, अब हम कैश बुक में एंटर कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 5000 विच वॉज रिवर्स बाय इट ऑन 5th अप्रैल। वो तो 5th अप्रैल को किया है, तो बैंक ने हमें रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें क्या कर दिया था, इंटरेस्ट अलाउड कर दिया था। हमारे अकाउंट को बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया था। कितने से किया क्रेडिट, 5000 से। अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एक्सेस क्रेडिट कर दिया है तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे 5000 रुपीज से। उसको डेबिट करेंगे 5000 रुपीज से। बैंक हैज रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट, बैंक हैज wrongly allowed interest, bank has wrongly allowed interest of 5000 rupees। मैं इसके बारे में दोबारा आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बैंक ने हमें रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट कर दिया, पर बैंक ने उसको रिवर्स किया 5th अप्रैल में, जबकि हमें बीआरएस बनाना है 31 मार्च का। अगर ये उसने रिवर्स कर दिया होता 31 मार्च से पहले, फिर हमारी कोई एंट्री नहीं आई होती। बट बैंक ने हमें गलत इंटरेस्ट दे दिया है। बैंक ने हमें क्या कर दिया है, बैंक ने हमें रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था। अब हमें बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बैंक हैज टू डेबिट द अमाउंट, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू पास दिस एंट्री। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल लगा देंगे, इस साइड का टोटल लगाएंगे और ये टोटल हमारे पास आ जाएगा। और इस टोटल को लगाने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक का हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। ये हमारे पास बैलेंस आएगा। आप इसका टोटल लगाएंगे, जरा इसका टोटल लगाइए एक बार, देखिए टोटल कितना आता है। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है, हमारे पास ये आ जाएगा 11,000। दिस इज 11,980। अब आप इसका टोटल लगा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। I'll just make the total for you and show you the difference। ये हमारे पास है 10,000 प्लस 5,000 15,000 16,000 17,000 और ये हमारे पास आ जाएगा 18,000। 10,000 प्लस 1,000 11,000 प्लस 1 12,000 प्लस 5 17,000 और 17,000 और ये हो गया हमारे पास है। तो हमारे पास ये 18,000 का टोटल आ जाएगा। अब 18,000 में से जब हम ये माइनस करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा 18,000 रुपीज में से जब हम माइनस करेंगे, ये आपका डेबिट साइड का, ये हमारे पास है 5,000 प्लस 500 6,020। तो जब हम 6,020 इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 0 8 9 11,980। ये आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक।
तो मैंने जो क्वेश्चन किया है आपके साथ, मैंने इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं किया है, मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझाया है। आप इस डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके taking this as concept, solve your questions. If you have any problems, you can always contact me. My details will be given to you. You can always fix up a time. I can always come back to you and I will explain you the concept of debit and credit. Now I'll tell you, when I'm in the interview board and I'm interviewing students who have also done the chartered accountancy and they apply for senior positions in the accounts field or the finance field, and when I ask a question to them regarding BRS, they become shaky, because the concept of BRS, of debit and credit, really can't go into the minds of the students, because they have done the concept of plus and minus, and we do not accept plus and minus in accounts. So please try doing all the questions of bank reconciliation statement with the concept of debit and credit, right? Thank you.